Can someone please confirm if you guys can hear me well? Is my screen visible to you? Yes, sir. Okay. So last time, guys, we have seen how to configure backup. We have seen how to configure DR. We are not discussing backup now anymore. Let's switch to DR. I'm sure you guys do not have any questions on backup. Right? I asked you many times. You guys did not ask, so I'm assuming it's clear to everyone. Backup and restore has been done. Let's talk about DR. DR, how to set up. We have done that. Test failover, I have shown it to you once, but still, we'll do it one more time. Okay. Now, before we do that, let me show you this machine, the one which I have here. इसमें हमने ये लगा रखा. This is the machine. Can you guys go ahead and check this IP and see if you are able to access my application? I mean, it could be any application. For now, I've just created a demo application. It could be any application. I just want to show it to you that how it works. So please go ahead and check this on your phone or your computer, wherever you are, and let me know if you are able to access this. UT-Kloud education. Got it, You right? get. Yes, It's sir. working. Fine. Yes. Now imagine that I have this application here up and running. People come here, they check my course, they connect with me, they contact, they enroll for courses, they pay online. This is how my application works. It's fine. For some reason, I want the disaster recovery. I mean, इस तरह के application के लिए कोई disaster recovery लेता नहीं है. By the way, understand one thing, guys. Whenever I say application doesn't literally mean कि mobile जैसा application कुछ होगा. Website के through जो होता है उसको भी application ही बोला जाता है. नॉट लिटरली हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि कोई क्लाइंट इंस्टॉल होगा या मोबाइल पे होगा वही एप्लीकेशन है. द वन व्हिच यू लुक्ड एट नाउ, it is my website, but it can be called an application also, because through this website, through this application, you can connect me. Through this you can subscribe to my course. Through this you can go to my YouTube channel. Through this you can make payment. So this is an application. I hope this is clear with to all of you. So whenever I am saying an application, literally उसका कोई ये मतलब नहीं होता कि application जैसा ही दिखना चाहिए. This is also an application. Is it clear to everyone? Okay. Yes. So now this is my application. इस पे मैंने already disaster recovery कर रखा है that if something happens, I should have backup. This is East US. Let's say that East US is going down. But before we consider that scenario, let's try the test failover. Whenever we, especially this is for you guys, you can clearly say that in 4 years, I have never got a chance to work on a DR failover. Why? Because I am working in an implementation team. एक इम्प्लीमेंटेशन टीम के पास कभी कोई प्रोडक्शन सर्वर होगा? व्हाट डू यू थिंक? एक अप एंड रनिंग प्रोडक्शन सर्वर होगा आप लोगों के पास? No. You'll never have it. You are हाँ. creating it, you are giving it to them. उसके बाद भी क्लाइंट उस पे हफ्ता भर अपनी टेस्टिंग करेगा एंड देन उसको प्रोडक्शन में डालेगा. बाय द टाइम इट इज इन प्रोडक्शन, उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी आपके सपोर्ट टीम की. हेंस ऐसा कुछ होता है तो मैक्सिमम टाइम इम्प्लीमेंटेशन टीम के पास कुछ नहीं आता है, कभी नहीं आता है. But you should know at least. But then how do you know कि failover चलता कैसे है वगैरह? When you are in a test, when you are in implementation engineering team, implementation team or platform engineer team or administrator, whatever you call it, उस role में हो. So whenever you are handing over it to someone, now I have created this and I'm handing over it to the client. But what will the client say? Did you test it? Microsoft recommends that before handing over, you should test it. Handover as in before you send it to production. In our case, it is handover. Before you hand it over to client, you should test it. And after that also, in every 180 days, you should test it. Disaster बहुत rarely होता है, 2-4 साल में एक बार होगा. बट ये नहीं होना चाहिए कि आपका सेटअप चल रहा है नहीं चल रहा, पता ही नहीं चला, जिस दिन डिजास्टर हुआ उस दिन पता चला कि ये तो चलता ही नहीं है. इसलिए इन एवरी 180 डेज विल चेक दैट वो कुछ चेंज हुआ होगा या नहीं, डेट इसमें दिख जाएगा. बट एज ऑफ नाउ इट्स 180 डेज और वो वेबसाइट पे वैसे दिख जाएगा. रिकमेंडेशन, in every 180 days we should do test failover. Again वो भी कई बार आपका सपोर्ट टीम ही करेगा, बट फर्स्ट टेस्ट फेलोवर हमेशा आपसे ही होता है. दिस इज फेलोवर, दिस इज टेस्ट फेलोवर. Okay, so now we are doing test failover. Now let's have a look at the difference. What happens? I'm doing a test failover. We have done this already, right? Test failover. I'm repeating it for you guys. I click on test failover. You guys still have my IP address with you, right?
keep that website open on your web page और उसको थोड़ा access करते रहो आप. Let's say if that goes down when I do the test failover. I mean, it doesn't, just for you to see. Also, I'm showing my screen to you guys, so you will know the status here. Okay, machine is running and I'm doing test failover. Now look at this. Which one do I want to take? This has the latest one, which is lowest RPO, return point objective. Which virtual network do I want to use? I hope you guys remember that whenever we do the replication, initiate that, your virtual network gets replicated with ASR. Yeah. Okay, and what does it say? It is recommended that the network selected for this test failover and failover operation are different. So whenever we are doing testing के लिए हमेशा एक अलग VNet रखना है, but now we do not have sufficient time और इतना डिटेल में नहीं करना है हम लोगों को, इसलिए अदरवाइज आप लोग हमेशा 2 VNet बनाकर रखोगे, टेस्ट किसी और पे करोगे. टेस्ट आप जो है अपने एक्चुअल इस पे नहीं करने वाले हो कभी भी. Okay, but we are doing it now, so it's okay. Now I click on test failover. Now look at this. How many machines do I have in my environment? I mean, I have only one machine. There was another one. We were doing that for some other practical. For this practical, we have only one machine, but let's see how it works. So I've started the test failover. And how it works. See, I forget this Terraform machine. This is running. This is the only machine I have. And now I have started test failover. In some time, you should see one more resource group here. The name will be UT-Kloud -dr -ASR. All this I have already explained. People who missed last session, please check that. Why is it coming ASR? Can we rename that? Can we select a different resource group? Yes, you can. Everything you can do. But we have explained that already. So I'm continuing from test failover. Okay, so this is how it is working. Test failover we have done, and look at this. It is starting the task. Understand one thing, guys. टेस्ट failover ये सब जो है आपका रिकवरी वगैरह कुछ नहीं है. एट द बैक एंड में क्या हो रहा है पता है? ये जो आपका एक डिस्क है ना इस मशीन का, दिस मशीन, ये सारी चीजें आप मैन्युअली कर सकते हो. एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड मैन्युअली. इसका एक जो डिस्क है, जैसे ही आपने बैकअप कर रखा था ना, तो बैकअप में इसने इस डिस्क का बैकअप ले रहा था. आप इसी से रिस्टोर कर रहे थे. आपने डीआर कर लिया, डीआर में भी इसका वो कंटिन्यूस बैकअप में वो एक पॉइंट तक लेकर आइसोलेटेड कॉपी बना रहा था, राइट. डीआर में इसी डिस्क को वो कंटिन्यूस रेप्लिकेट कर रहा है. और उसके बाद जब आप व्हेन यू क्लिक ऑन टेस्ट फेलओवर, वो इसी डिस्क से एक और मशीन बना रहा है, व्हिच कैन बी अचीव्ड इजीली एंड मैन्युअली. आप इसको जो है यहाँ पर जाके ये कर सकते हो, एक स्नैपशॉट ले सकते हो और कहीं और जाके उससे एक मशीन बना सकते हो. बट देन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा. एंड ये जो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल इन मैन्युअल अप्रोच. कंटिन्यूस आप बार बार हर 5 मिनट पे जाके नहीं लोगे, राइट. बट एट द एंड अप्रोच यही पर हो रहा है. वो इसी डिस्क का वो बैकअप ले रहा है, वहां पर एक डिस्क ही बनाता है. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन टेस्ट फेलओवर, वो उसी डिस्क से एक मशीन बना रहा है, which you could have done manually. उसी मशीन को क्रिएट VM वगैरह करके आप पासवर्ड वगैरह सब कुछ देते, ये सब करते सेम चीज वो ऑटोमेटिक कर रहा है बैकएंड में आपके लिए. दिस इज सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन फॉर यू. अदर देन दिस कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes guys, yes, no, maybe. Are you getting it? Not getting it? How it works? Yes. Okay, now look at this. Because it was a test failover, hence the machine name is test. Okay, DSR ये बन गया, ठीक है, everything is fine. Now this machine, this is still running. Nothing happened to my machine. If you guys want, you can go ahead and check the application again. Check once if that is working fine. It is working. Okay. Meanwhile, I want to put an IP address, a public IP on this one. So you can check this application also. Now this, we are in testing mode, right? This is in testing mode. I'm saying कि ठीक है आपका ये machine बन गया. How would you test that? Application को test करना है. Normally तो सब कुछ public IP से होता है, but now we do not have connectivity to public IP. Hence we are using private IP. Sorry. Normally private IP से होता है. We do not have connectivity. हमारा setup नहीं है, इसलिए we are dependent on
public IP. Now I want to assign a public IP here. What do I do? Who can guide me? How do I apply a public IP to this machine? Yes, guys, what happened? This is one of the basic tasks we have done. Network setting, IP configuration. Network setting. Network setting, then where do I click? So click on NIC, UT-Kloud. Click on NIC. This one? Yes, sir. If you want to add the new one, you can add the new one. Otherwise, you can click on IP config one, and there is an option to add the public IP. IP config. No, I don't want two IPs. That's okay. So I don't want to add a new one. Okay. Associate public IP. Do I have any IP here? I'll simply create a new one. I'll just give a test name so it will be easier for me to recognize that later and delete it. This is an extra step we have to do only here in practice. Otherwise, normally उस सबनेट में बहुत सारे मशीन होते हैं और you will simply उस IP एड्रेस से चेक कर लेते हो. And by the way, when it comes to checking the application, literally इस तरह से नहीं होता application check. They do it in a programmatic manner. कहीं से कोई स्क्रिप्ट वगैरह चलाते हैं उसमें वो IP एड्रेस होगा and then they come to know. Simple. Test why it failed. Failed to update the network and in the DNS record already reserved for another server. I hope you guys are getting it right. That why are we putting a public IP here, and you don't have to do that in a real world. Just we Let's say if want it to works. check, that is the reason we are. Yes, here we have to just check this once. And I mean that is also not necessary. Machine up हो गया है ना तो it's bound to work. उसके बाद भी नहीं काम चल रहा है तो maybe OS level की कुछ setting होगी. You are responsible कि आप उस machine को आप लाना चाहिए आप लोगों ने. By the way, one thing, first time when you synchronize or when you set up the DR, that time आपका network जो है पूरा network sync हो जाता है. But after that, if you make some changes to network, so virtual network is not being replicated, guys. Only first time पूरा का पूरा network यहाँ पर बन जाएगा. उसके बाद उसमें आप नया सबनेट वगैरह ऐड कर रहे हो ना तो वो नहीं होने वाला है. But that is not even required. आपकी मशीन का जो डिपेंडेंसी है वो सारी चीजें फर्स्ट टाइम में सिंक हो चुकी है. One more thing. Again, I will be sharing one example with you till the time it is working. I'll be sharing one example. Very good example. You can use it in your interview. You can present it as one of your own examples. Again, disclaimer, this is not my example. I am picking it up from someone else's example. So what these guys did, they wanted to set up a DR. And obviously, before setting up DR, client will ask for price. I'm talking about the architect team. Okay, they were trying to set up a DR और price उन्होंने दिया जो भी उनका calculation था. Meanwhile, guys, this is the machine which was created after test failover, right? So this is the machine we have. I am not sure if it will work. Yeah, it will definitely not work. Good, it reminded me. It will definitely not work. But I'll still give you the IP. If I get time, I'll show it to you how to make it work. I'll tell you but why it doesn't work or why it won't work here. Because whenever you do a DR, first time, your network that will get copied, your machine continues being synchronized, subnets, they get copied. One thing, there are multiple things which they do not get copied.
और दे आर नॉट इवन फर्स्ट टाइम ऑल्सो दे आर नॉट बीइंग कॉपीड, और उसके बाद सिंक भी नहीं होते. One of them and very important is NSG, Network Security Group. Now you tell me, if I do not have a desired a proper NSG on this one, इस पे इंटरनेट चलेगा क्या? I mean incoming इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा? What do you think? What are the 6 default rules of If NSG, it guys? is 3 inbound and 3 outbound rules. Yeah, what are those? By the way, you are trying to access my website here. You guys are trying to access. So which role is impacting us? अगर आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो तो कौन सा रूल, इनबाउंड या आउटबाउंड, कौन से रूल्स से हम लोगों को फिलहाल डील करना है? हम कर रहे हैं तो वो आउटबाउंड होगा. आपके तरफ से अगर वो नहीं हो रहा है ट्रैफिक फ्लो, तो आपको इनबाउंड करना पड़ेगा. नहीं, मैं सिंपल क्वेश्चन अगेन. This is the IP I've shared you. I shared this IP with you. You guys are trying to access my website. Whether it's not working or working, it depends on which roles, inbound or outbound. Inbound role. Simple. Do not make it complicated, guys. Though I've been saying कि एक single word में नहीं देना है, that does not mean कि जो not necessary उसको ये मत करो. It's very simple. Someone is trying to access my machine. Traffic is incoming to me. So it's an inbound role. Now tell me, what are the 3 default rules on inbound? One is Allow VNet in allow inbound and allowing load balancer. Yes. What else? and deny all inbound. Now this traffic, is it coming from VNet? No, Yes, obviously no. You guys are not in my VNet. Is it coming via load balancer? Are you going to some load balancer and then No. load balancer coming to me? So it again is not. one of the others. And what does it say about others? Allow कर रखा है या deny कर रखा है? Deny. Deny. That is the reason you guys are not able to access website on this. If you want to do that, यहाँ पर आपको NSG बनाना पड़ेगा. Either you can create one NSG or you can attach an existing NSG. But ये वाला NSG attach कर पाऊंगा मैं? What do you think? Can I attach the same NSG which is here on UT-Kloud VM001? Can I attach the same NSG here, guys? नॉट पॉसिबल सोहेल. Why? क्योंकि ये जो आपका टेस्ट वाला है ये ईस्ट यूएस है. और यूटी क्लाउड जो है वो ईस्ट यूएस है. Yes, got your answer. I mean, could be wrong here and there, location गलत भी बोला होगा आपने. That's fine. Logic is correct. That these machines are in different regions, so you cannot. So what if I would have selected DR के लिए भी मैं East US कर लेता, then मुझको NSG नहीं बनाना पड़ेगा. What do you think about it? As a client, I'm asking कि यार आपको इधर अलग से NSG बनाना पड़ता है, so why don't you just do the DR East US में ही DR कर लो, तो आपको NSG नहीं बनाना पड़ेगा. What do you think about it? नहीं, हम लोग डीआर, क्योंकि हम लोग डीआर इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर रीजन डाउन है ना. Exactly. अगर उस पर्टिकुलर रीजन Should में ही be अगर हम in लोग another करेंगे region. तो Yes. फिर वो आगे Got जाके it. एनएसजी कैसे वो सपोर्ट Correct करेगा. answer. Correct answer, guys. So DR का मतलब ही है itself that when there is some disaster in that region, you should have access to your application from some other region. Also, it is technically impossible. You saw that screen, right? Where you click for DR, so it doesn't allow you to select the same. If it is in East US, you can select anything other than East US, but you cannot select East US. Got Yeah. it? So these are the drawbacks of DR. Not exactly drawbacks, but these are the limitations, I could say. तो लाइव एनवायरनमेंट में आप कैसे करोगे? एनएसजी बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है. सो व्हाट यू विल डू, जब भी आप पूरा डीआर सेटअप करते हो ना, बाय द वे यू गाइस डोंट डू इट, ये सब आर्किटेक्ट टीम का काम होता है. पूरा प्लानिंग जो है वो उनका काम होता है. तो जो जो रिसोर्सेज नहीं बनने वाले हैं, दोज रिसोर्सेज यू ईदर क्रिएट देम ऑलरेडी यहाँ पर आके. तो व्हाट विल आई डू, यहाँ पर आके मैं ऑलरेडी इसको करूँ, बना दूंगा यहाँ पर. ठीक है, इधर आई विल शो इट टू यू वंस, इधर टेस्ट वाले में या एक्चुअल फेल ओवर करेंगे उसमें, किसी एक में बता देता हूँ आप लोगों को. ठीक है. So we'll do that in the actual one. Let's not do it here because I will be deleting it now. Okay. So either you will create NSG वगैरह सब, यहाँ पर load balancer नहीं replicate होता तो आप load balancer भी बना कर रखोगे. But NSG is free for me. तो fine, NSG मैं बना के रख सकता हूँ. I can afford कि मैंने DR side पे एक NSG already बना कर रख दिया. But load balancer उसमें मुझको cost लगता है. साल में एक बार होने वाली चीज के लिए मुझको या तो हर पूरा महीना भर, हर साल पूरा साल भर उस load balancer का cost bear करना पड़ेगा, right? Or what you can do, you can create the PowerShell script
which is tried and tested, जिसके थ्रू आप मिनट्स के अंदर, जैसे ही डीआर वहां पर होता है, मिनट्स के अंदर यहाँ पर आप सब कुछ बना लो। जो आपका मशीन वहां से फेल ओवर होके यहाँ पर नया क्रिएट हो रहा है, जिसमें जो 10 मिनट्स लग रहे हैं ना, विद इन दोस 10 मिनट्स आपका दूसरा रिसोर्स पावर शेल स्क्रिप्ट को यूज करके ये सब बना देना चाहिए। इतना क्विक आप लोगों का पूरा सेटअप रेडी होना चाहिए, देन ओनली इट इज कॉल्ड अ डीआर सेटअप, अ प्रॉपर वन। गॉट इट गाइस? yes, no, maybe, are you getting it? Because see, ये जो है ना रिसोर्स ग्रुप अभी बना है when we started fail over, but that doesn't mean कि पहले से नहीं हो सकता है। आप पहले से एक रिसोर्स ग्रुप बना के रख सकते हो, एंड यू कैन सेलेक्ट कि फेल ओवर होने के बाद इस रिसोर्स ग्रुप में मशीन बननी चाहिए, और उस रिसोर्स ग्रुप में आप पहले से आपका एनर्जी रेडी रख सकते हो, पहले से आप अपना लोड बैलेंसर रेडी रख सकते हो, सब कुछ आप पहले से रेडी रख सकते हो, ताकि फेल ओवर के इवेंट में यू डू नॉट टेक मोर टाइम। जो भी रिसोर्स अपने आप रेप्लिकेट होता है, डू नॉट डू एनीथिंग फॉर देम। जो रिसोर्स नहीं रेप्लिकेट होता है, उसका एक मैट्रिक्स, आई शेयर द लिंक, वहां पे आपको दिख जाएगा कि ये रिसोर्स रेप्लिकेट होता है, ये रिसोर्स रेप्लिकेट नहीं होता है। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो As you said in VNet, एक बार ही होता है. If we add more subnets and we created multiple VMs in that subnet, is it possible to recover that? are you replicating those VMs also? Yes. Yes, so if you replicate that VM, वो फिर से एक और रेप्लिकेशन बन ही जाएगा। if you are replicating all But VMs, in तो different subnets. हाँ, जो भी VM आप बना रहे हो ना, उसको डिफरेंट सबनेट में आपने बनाया, राइट? लेकिन उस VM को हाँ भी आप रेप्लिकेशन में लगा रहे हो, राइट? हाँ. तो वो उसका सबनेट भी ये करेगा, रेप्लिकेट करेगा, सबनेट और VNet फिर से रेप्लिकेट कर लेगा। लेट्स से दैट यू हैड ओनली वन अच्छा मशीन अच्छा. हियर, इसको आपने रेप्लिकेट किया, और इसके बाद आपने यहाँ पर 4 सबनेट और बना दिए। दो सबनेट्स आर नॉट बीइंग रेप्लिकेटेड, बट वो सबनेट वहां पर रेप्लिकेट नहीं होने वाले। लेकिन आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी मशीन की डिपेंडेंसी उस पर है भी नहीं। एंड इफ यू थिंक कि उसमें जो मशीन आपने बनाई है उसको भी रेप्लिकेट करना जरूरी है, तो द मोमेंट यू रेप्लिकेट द मशीन, उसके साथ वाला सबनेट वैसे ही रेप्लिकेट हो जाएगा। अच्छा. Then only. हाँ. गॉट इट? Yes. ओके, सो इज दिस क्लियर गाइस स्टिल हियर? Okay, now let me delete this one, test failover. By the way, test failover की भी टेस्टिंग होती है, okay? कोई भी ऐसा नहीं छोड़ेगा। Now in this case we are leaving it, though you guys are not able to access my website, but I'm still leaving it because concept मैंने समझा दिया, और हम इसको एक बार उस एक्चुअल फेलोवर में करके देखेंगे, hence we are not repeating. But एक्चुअल टेस्ट फेलोवर में अगर कोई इशू आ रहा है एनएसजी वगैरह का, तो you will have to create एनएसजी, उसके बाद टेस्टिंग होगी, सक्सेसफुल टेस्टिंग होगी, उसी के बाद आप डिलीट करोगे, उसी के बाद इसको सर्टिफिकेशन मिलेगा कि ये टेस्टेड जो है प्रॉपर आपका डिजास्टर रिकवरी है। जस्ट बिकॉज वहां पर ज्यादा काम है इसलिए आप छोड़ोगे नहीं। वी आर डूइंग इट हियर, वी आर लीविंग इट बिकॉज वी आर practicing and we need to understand the concept. Okay, so once that is done guys, you do the cleanup test failover. You simply click here and you will put your notes here. Okay, it was successfully done. That too, ignore the spelling mistake guys. That too, you won't mention exactly in this one word. It comes in steps. Okay, first we did this XYZ, second step ये किया, third step ये किया, who was available, fourth step application team से Tom was there, Tom ने टेस्टिंग की, टेस्टिंग में क्या किया, टेस्टिंग में क्या रिजल्ट्स आए, मे बी ही विल पुट सम नोट्स एटसेट्रा, ये सब लगाएगा। इसमें कोई लिंक पेस्ट कर देगा, दैट वी हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स, और उसके लिंक जो है शेयर पॉइंट पे रखा है वो यहाँ पर है। आर यू गाइस गेटिंग इट कि कितने डिटेल में होता है टेस्टिंग? And you should know this process because even if you are part of implementation team, test failover तो आप लोग ही करने वाले हो definitely. So are you guys getting it? Any confusion? सोहेल जस्ट पूछना है मुझे, जब भी हम लोग डीआर एक्टिविटी करते हैं और उसमें हम लोग ये टेस्ट फेलोवर हम जब करेंगे, तो इसका टर्न अराउंड टाइम एज पर प्रोजेक्ट होगा या फिर इसका डिफॉल्ट टर्न अराउंड टाइम क्या होता है ये सब प्रोसेस का? No, there is no turnaround time. It's okay. It's just a testing. There is no turnaround time. You cannot decide a time. As soon as you can create something, it's fine. This is not ओके a ठीक ticket है. जिसका कोई turnaround time हो. You are doing a disaster recovery. इसका कोई turnaround time नहीं हो सकता है. Okay. ओके So क्योंकि हाँ जी. we are deleting it here and now it's being deleted. Yes, sorry. Continue.
क्योंकि सोहेल, मेरे प्रोजेक्ट में एक माइग्रेशन हो रहा है, तो वो अभी तक उनका मतलब कि परमिशन ही चल रहा है कि हम लोग ये 3 सर्वर्स है जिसको हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं, और कि मतलब हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम जैसे मुझे हम हमारी टीम को कि इसके लिए आपको मॉनिटरिंग नहीं करना ये सर्वर के लिए, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर माइग्रेशन करने वाले हैं। तो माइग्रेशन जब पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, अभी उसको तकरीबन एक हफ्ता हो गया है, तो जस्ट मैंने सोचा कि एक बार आपको No, there is मतलब not डाउट क्लियर कर लेते हैं। there is no turnaround time. These are big tasks. This is not a simple ticket के किसी को access देना है. Those tasks will have turnaround time. किसी को AD में access अच्छा। देना, आपको ticket आएगा. Please do it within 4 hours. आपको RBAC access देना, please do it within 4 hours. Those tasks will definitely have turnaround time. इनका turnaround time नहीं हो सकता है ऐसे hours वगैरह में नहीं. Obviously there is a deadline. ऐसे नहीं होगा कि आप लाइफ टाइम उसको लेकर बैठोगे. आपको अगर 10 सर्वर बनाना है तो आपको 1 वीक का टाइम मिला होगा कि आपको 10 सर्वर्स बनाने हैं, उसमें ये होगा, हाँ, इतने वही वही वीनेट वही, होगे, हाँ उतना जी, वही सबनेट पूछना होगा. था मुझे। हाँ, बराबर। Obviously there will be some time, but ऐसा कोई फिक्स नहीं है. I cannot decide it for you, your team, or no one else can decide or replicate. नहीं हो सकता है वो. as in इस कंपनी में इतना टर्न अराउंड चलता है तो उस कंपनी में भी होगा. that can it's not possible. Every company, every project will have a separate timeline for that. किसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कितनी अर्जेंसी है, that depends. Okay, so this is how you clean up the test failover, guys. Now look at this. It has started deleting it. Now if I check slowly, and it's already gone. आपका resource group भी चला गया, आपकी machine भी चलेगी. Everything has been done. And now if I come here, let me refresh it once. If I refresh it once, I hopefully will see when was it successfully tested last time. If I go here and disaster recovery, look at this last successful test failover. Can you guys see it? So this should be here and it is 180 days. अगर ये 180 days से older date है, so you guys need to perform a test failover. ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया, you cannot do it. We can again do a test failover. And you don't have to, once you when you do a test failover, your actual machine was not down for a single moment. पूरा time आपकी virtual machine up थी. Okay, plus it is protected, it is healthy, it is being replicated. सब कुछ वैसे ही चल रहा था. There are no changes. Look at this, guys. ये आपकी मशीन है, यहाँ से स्टोरेज फोल्डर में जाता है, यहाँ से डिस्क बनती है आपकी. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ऑन डिस्क. जैसे आप ट्रिगर करते हो टेस्ट फेल ओवर या फेल ओवर, इस डिस्क से एक वर्चुअल मशीन बनना शुरू हो जाती है. दैट इज हाउ इट वर्क्स. इज इट क्लियर, गाइस, टू एवरीवन? Yes. Now let's do the failover, the actual failover. Now look at the difference. First time में आपका machine बंद नहीं हुआ था. Machine had a suffix called test. Now when I'm doing a failover, what is it doing? It is trying to do the latest synchronization also. वैसे ये possible नहीं होगा. Why? When do you do the failover? जब आपका region down हो चुका है और उस down region में वैसे ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. But still it gives a try because that's not the only time when you do the failover. कई बार आप migration के लिए भी failover करते हो. तो nowadays after Azure migration you don't do that, but I'm just telling you. But whenever you do the actual failover, what it does synchronize the latest data. Again, you get an option here. When I do this, now look at this. Shut down the machine and synchronize the data before beginning the failover. So even if I'm selecting latest, इससे भी कुछ latest होगा, it will try. And it will make sure that there is no difference between this data and this data. तो अभी यहाँ से sync कर रहा है इसको. This is the machine, it is syncing. Sync करेगा और उसके बाद वो start कर देगा. We'll see it here. Once the machine is up, now we are going back and we will check कि वहां पर accessible है या नहीं है. Though I'll have to create NSG for that. Only if you guys want to see the website up and running. अगर concept clear है तो we can skip creating the NSG. And that can be achieved using RDP also, guys. RDP लेकर देख लो तब भी आपको समझ में आ जाएगा. Yes, sir. And now this is being created. It may take some time. Meanwhile, let me explain one more issue जो मैं आपको बता रहा था कि you can use it as your reference and I am quoting someone else's example. This is not my own example, but it's a good one. You can use it. So, architect team को जो है एक total cost of ownership, TCO, Azure calculator सबसे एक fair idea देना होता है that when you are doing this कितना charge लगेगा.
I want to see कि worth भी है या नहीं. So in their scenario, they were doing one SQL server का replication कर रहे थे वो लोग. And then they said to client कि $20 per hour का charge लगेगा. तो per day का, let's say $20 per day. इसमें इन्होंने network bandwidth भी calculate कर ली. इसमें ये लोगों ने आपका जो secondary machine बनेगा, everything they calculated. They said $20 per day. That is what it will cost you. Client said my application is crucial. I'm happy to pay $20 per day. जितना भी उसका मंथली हो जाता है. आई एम कोटिंग, नंबर्स आर जस्ट वेग, ओके, डोंट कोट मी कि $20 में तो कोई मशीन नहीं मिल रही है. इट कुड बी एनीथिंग. लेट्स टेक 20 फॉर एग्जांपल. एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, once this was set up and everything done, so they checked the cost, actual cost. आर्किटेक्ट टीम के पास भी जो है ना एक ये होता है, व्हाट यू से, हाइपर केयर पीरियड, जैसे आपके पास होता है, आर्किटेक्ट टीम के पास भी होता है. दे आल्सो डू द टेस्टिंग एवरीथिंग खुद के पास, एंड देन दे हैंड ओवर द डायग्राम टू यू गाइस, जिसको लार्ज स्केल पे आप ये कर सकते हो. वी जस्ट इम्प्लीमेंट इट ऑन वन सर्वर, एक पे एक पीओसी करके देखते हैं एवरीथिंग इज वर्किंग, देन वी हैंड ओवर द डायग्राम टू यू गाइस. इस तरह से होता है. सो व्हेन दे डिड दैट, एक दो दिन उसको चेक किया उन लोगों ने, दे वर बीइंग चार्ज $100 पर डे. प्रॉमिस कितना किया था? 20. चार्ज कितना हो रहा है? 100. So what happened, what went wrong? Then later on when they checked, SQL server, now this requires a little bit of SQL का understanding. जिसका है it's okay, जिसका नहीं है that's completely fine. You just understand the logic behind it. So SQL server में क्या होता है, and why am I explaining this? Because one of the features is there which is very important, and you can explain that. So this is my virtual machine and this has multiple disks. ये है मेरा C drive, ये है मेरा डेटाबेस ड्राइव, एक्चुअल डेटाबेस ड्राइव. एंड एसक्यूएल में एक टेम्पररी डेटाबेस भी बनता है, टेम्पररी ड्राइव भी बनता है. ये होता है नॉर्मली थर्ड डिस्क में. ओके, ये हुआ आपका ओएस डिस्क, ये हुआ डिस्क 1 जिसमें एक्चुअल डेटाबेस है. लेट मी ओएस डिस्क, दिस इज माय डेटा डिस्क 1. बस इतना ही मुझको, दिस इज व्हाट आई रिक्वायर्ड फॉर माय एप्लीकेशन. बट व्हेन इट इज एसक्यूएल सर्वर में एक डेटा डिस्क लगाना पड़ता है हम लोगों को, जो बनता है टेम्प DB. अब टेम्प DB का क्या खासियत है? पीपल हु आर फ्रॉम एसक्यूएल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एनी टाइम यू रीबूट द सर्वर, ये टेम्प DB जो है ना, ये पूरा का पूरा स्क्रैच से डिलीट हो जाता है और फिर से बनता है, डिलीट हो जाता है और फिर से बनता है. विच मीन्स दिस डेटा इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. मतलब वो कैशे डेटा है आपका. आप इफ दिस इज नॉट रेप्लिकेटेड तब भी आपका काम चल जाएगा. आपका डेटा पूरा यहाँ पर है. ये डेटा डिस्क 1 पे रेप्लिकेट करने से पहले जो भी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर करता है डेटा डिस्क 2 पे. दिस इज योर टेम्प DB. नाउ व्हेन दीज गाइस कैलकुलेटेड एवरीथिंग, वो लोगों ने सिर्फ जो है ओएस डिस्क और उसके डेटा को कंसिडर करते हुए किया था. एंड while while doing this, while setting up the replication, do we get an option guys to select disk, or do I have to replicate all the disk? What is your understanding? I mean, we have done it already. This is a straight question, you should know the answer. Still I'm asking, if I want to replicate this VM1, do I have an option that I can replicate only OS disk? Do I have an option I can replicate only OS and data disk 1, or do I have to do all of them? We have the options to select. Yes, so we do have option, but these guys, what they did is they selected data disk to temp DB also. They were not aware of it. Now this temp DB, इसका काम ही ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा डेटा राइट एंड राइट करता है छोटे छोटे इसमें. बट एवरी टाइम यहाँ पर कोई छोटा चेंज हो रहा है, ये यहाँ रेप्लिकेट कर रहा है. एवरी टाइम यहाँ कोई चेंज हो रहा है, ये इसको रेप्लिकेट कर रहा है. इसमें तो रेप्लिकेशन बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है, विच इज मेन डेटा. काफी जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही देर में हो रहा है, बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शन दे हैपन हियर. 20 मिनट में यहाँ जाता है, ये रिक्वायरमेंट, ये रेप्लिकेशन मुझको चाहिए था, बट ये हर 20 सेकंड का रेप्लिकेशन जो है वो भी यहाँ पर हो रहा है. एंड दिस इज ह्यूज डेटा. दिस इज द रीजन वो 20 से सीधा $100 पे उनका चला गया, जिसका भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन्ड इट, राइट? एंड दिस इज जेन्युइन वन. I looked at that and this is very genuine one. So they did not know about it, and later on when they came to know about it, what they did, उसको सबको synchronize को फिर से delete वगैरह कर दिया, because they were in testing mode. Then they synchronized only OS disk and data disk 1. अब इस डिस्क को वो लोगों ने synchronize करना बंद कर दिया. Now you guys tell me, if I'm not synchronizing this disk and there is a disaster recovery, will there be any impact? Will I lose any data? If yes, how? No. If no, why? Yes, guys. No, you'll not lose. Why won't I lose the data?
Or tell me one thing, if I keep it or if I don't keep it at the time of DR, is there any difference for me? Yes, then what is the difference? If no, why? Or I just told you the properties of this disk. What did I say about this disk, guys? What is it? So I guess we'll need that disk because you said जो भी processing होता था वो डेटा डिस्क का जो भी प्रोसेसिंग होता था तो वो 10 DB में डेटा स्टोर करता था काइंड ऑफ मेटा डेटा No, so it's it not metadata. will It's cache. Cache. I use the word cache data. It's not metadata for cache sure. Yes. No, we don't require I it. Okay, guess let it be. We have only 3 minutes. I want to cover this in this recording session, so I'll Okay. answer that. We do not require this disk. Why? I told you one more thing. Whenever you reboot, forget the DR वगैरह. Simply machine को भी reboot करोगे तब क्या होगा इस डेटा के साथ? It gets deleted और वो जीरो से फिर से डेटा बनने लग जाता है. Getting it? This is just the cache data. ठीक है, ये सिर्फ कैशे डेटा है, टेम्परेरी डेटा. दिस इज नॉट योर एक्चुअल डेटा. बट व्हेन यू आर सिंक्रोनाइजिंग, वो सब कुछ सिंक हो रहा था. सो नाउ व्हेन आई से कि व्हेनेवर आई रीबूट द मशीन विदाउट एनी डीआर, फॉरगेट कि कोई डीआर है या नहीं है, सिंपली भी मैं अगर मशीन को रीबूट करता हूं तो ये डेटा वैसे ही मेरा डिलीट हो जाता है. सो नाउ यू टेल मी, इवन इफ आई सिंक दिस डेटा, डीआर के केस में मशीन रीबूट होगी या नहीं होगी? कैन वी डू अ डीआर विदाउट रीबूटिंग द मशीन? नॉट टॉकिंग अबाउट द टेस्ट डीआर. No, no. Without rebooting is not possible. नॉट पॉसिबल, राइट? और हम करेंगे भी क्यों? अगर मशीन अप एंड रनिंग है, वी आर नॉट डूइंग डीआर. ये मशीन बंद हो गई तभी हम डीआर कर रहे हैं, राइट? एंड व्हेन वी आर डूइंग द डीआर, इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर मैंने सिंक कर भी रखा था, सो व्हाट विल हैपन व्हेन दिस मशीन रीबूट्स? क्या होगा? विल आई हैव दिस डेटा, गाइस? Cache. No, we No, won't. no. दिस इज कैशे, वो एम्प्टी डिस्क होगा. सो व्हाट्स द यूज ऑफ इट? So this is what happened with them. They were sinking a disk unnecessarily, जिसकी वजह से वो 20 से सीधा $100 पे जा रहा था. But later on, those guys figured it out, and they, यहाँ पर एक फीचर हमको एक्सप्लेन करना था बस, that while doing the DR setup, we do have an option like that I can select only required disk. I don't have to select whole virtual machine and all the disk attached to that. I do have an option. I can select my own disk. This is the solution for this. Got it? Yes, guys. Yes, Yes, no, yes. maybe. Okay, now here replication has been done successfully. We'll go to that machine and check. Now look at this. Replication होते ही आपका failover का ऑप्शन चला गया, टेस्ट failover चला गया. Why? Because replication होने के बाद ये आपकी मशीन जो है ये शट डाउन हो गई होगी. Let me show it to you. टेस्ट failover में ये सब नहीं हो रहा था. Look at this. The actual machine which was in East US, it has been stopped. And now this is the machine where I'm running my application. Okay. Now look at this. I have to commit. Till the time I commit, this is not done. I still have a chance to change the recovery point. Suddenly I realized या दूसरा email आ गया application owner से, नहीं यार हमको यहाँ से नहीं करना था, actually यहाँ पर एक virus था, we have to do it from here. You can still do that, but as of now that is not the requirement, so we'll commit it. And now I'm committing it. It has been done. Now at this stage my machine is not being replicated. Now it is single without redundancy machine which is in West US. Now there are two methods. Okay, only 30 seconds are left, guys. We'll join the session without any break using the same link. So I don't want to lose the rhythm. We'll cover it unless you guys want a break. Say it quickly, guys. Session will end. Do you guys need a break? Continue. Okay, let's continue using the same link. I'm stopping the session. Join as soon as possible.